तो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद पॉलिटी एंड मॉडर्न इंडिया के। मंडे से मॉडर्न इंडिया के आरटीएफक्यू स्टार्ट कर देंगे। पॉलिटी मॉडर्न इंडिया हो जाता है, देन विल स्टार्ट विद मेरा वाला सेक्शन जो साइंस का बचा हुआ है, एनवायरमेंट है, इकोनॉमी है, विल डू आरटीएफक्यू फॉर ऑल दीज। ओके, तो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन। अब ज़्यादा बहुत बड़ी क्लास नहीं, छोटे छोटे से टॉपिक्स, we will quickly do it. So today we are covering railways, airways and inland waterways. Again, we are not only covering economic survey of India, but also the other current affairs which have been there. PIB में जो year end review आता है ministry का, I've gone through that also, and all the relevant section have been included here. Okay, एक तो इतनी दूर दूर सब बैठ के सब यहीं बैठते तो मेरे को यहाँ यहीं देखना पड़ता ना। Vishnu, why do you want to sit at the very corner always? Why are these people laughing? Now, Vishnu, why do you have to go in the corner? Speaker, if you sit here, I'll be the speaker. Chali, let's start with today's session. So first we are starting with the railways wala part. So some basic things about railways we should know, that in India railways started in 1853 and the first train went from Mumbai to Thane, a distance of 34 kilometers. From there till today, like today we have more than 7,000 stations and the route kilometers that we have is 68,000 kilometers. If you would look at the number of employers, railways is the largest employer in the country. 13 lakh people work under Indian Railways. And if you want to look at the traffic, so ye dekho, 800 crore people roughly railway carries every year. Now this went down drastically in COVID year 2021 wala, because COVID mein lockdowns, trains were closed and people were not traveling a lot. Then in 2021 also numbers are way lesser than 800 crore jo yahan pe hua tha. But here also there was a limitation. We had the Delta variant and Omicron variant. 2021-22 में ही हुआ था. First in April में we had Delta variant and then November, December, January we had Omicron variant वाला problem. In 2022-23 there is no reason for less number. So this number for 2022-23 is of only April to November period, and therefore for the entire year this number may actually reach the pre-COVID passenger traffic numbers. Okay, but if you look at the freight traffic, it wasn't impacted much by COVID. 2019-20 slight dip hai, but it wasn't impacted much and it has kept on increasing, it has kept on going up. So aap dekhenge during FY20 IR carried 1.2 billion tons of freight and 8.1 billion passengers, making it the world's largest passenger carrier and fourth largest freight carrier. This freight was sustained by IR despite the COVID-19 lockdown. This is what we had been mentioning. Now railways, the entire Indian railway can be divided into 17 zones. These are the zones. Sometimes not in UPSC but in state PCS examination they ask these questions ki Central Railways का headquarter क्या है या Eastern Railway का headquarter कहाँ है. So we should एक बार देख लेना बस, not very relevant for UPSC. कहीं दूर दराज से कहीं पूछने तो वो पूछ सकते हैं. So the Indian Railways have been divided into these 17 zones. Each zone is further divided into division and division level पे होते हैं divisional DRM. DRM एक railways में it's considered to be one of the important posts. So the entire Indian Railways is divided into 17 zones. Those 17 zones have divisions under them. Okay, ये वाला hierarchy भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए. Now, though I have listed 17 zones here, some of the sources also include Konkan Railway, उसका headquarter नवी मुंबई में है, as the 18th zone. तो इसको भी याद रखना, कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या पता पूछ ले. ओके, नाउ these are some things which were mentioned in this year's economic survey of India. Key initiatives taken by Indian Railways. Some of this we are going to discuss in detail नीचे, but some of this we are only discussing here in this table. This table I've taken from economic survey of India. तो पहला है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल. It is what bullet train की बात हम कर रहे हैं, which is supposed to be built with support from Japan. So about this, it is being said that it is under execution and survey and design aspect of it has been finalized.
about bullet train, what is happening. Second, dedicated freight corridor project. So what is dedicated freight corridor? See, right now, when you go to railway line, when you see railway line, you see that on the same line, passenger traffic also goes, and on the same line, freight traffic also goes. Generally, freight trains move at much slower pace, and priority is given to passenger traffic. So आपको when you suppose you travel by train, so you notice it at this time. Most of the time आपको अगल बगल में जो waiting trains दिखेंगे, those would be the freight trains. But freight traffic, fast tracking freight traffic is very crucial, very important for businesses. So what government has government initiated two projects under dedicated freight corridor. So what is dedicated freight corridor? On these corridors only freight traffic would, so that passenger traffic को priority देने के चक्कर में freight traffic doesn't get uh, ignored or delayed. That's one aspect. Now, two dedicated freight corridor, eastern and western lines have been created. एक दिल्ली से मुंबई जा रहा है, एक लुधियाना से कोलकाता. Those two DFCs, dedicated freight corridors, have been created, eastern and western dedicated freight corridors along the these DFC has been created. Then Gati Shakti Multimodal Cargo Terminal Initiative. What is this Gati Shakti Multimodal Cargo Terminal? Now, cargo, समझ में आया क्या होता है? Cargo would be the things that you will be carrying, like freight traffic में जो आप चीजों को लेके जा रहे हो, तो उन्हें स्टोर करने के लिए आपको जगह चाहिए होगी. Right now, railways may not have enough storage facilities. So what under this initiative has been done is private players have been asked, you create these facilities. Under this, GCTs are being developed by private players on non-railway land as well as on fully or partially on railway land. So जहाँ पे railway land can be made available, it is being made there, and on non-railway land also it is being made. So 21 GCTs have been commissioned, and more than 90 more locations have been provisionally identified for development of GCTs as of 31st October. This will boost investment from industry in the development of additional terminals for handling rail cargo. बात समझ में आई? गति शक्ति मल्टीमोडल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट सेक्टर डेवलप करेगा, either on their own land or on railway land, or partly on railway land and partly on private land. यहाँ पे trains or the cargo things could be stored, और यहाँ से these would be, you will see multimodal cargo terminal. तो यहाँ से road transportation, connectivity and all those things would also be very effective. Okay, so Gati Shakti Multimodal Cargo Terminal. What is this initiative doing? So prelims में ये सारी चीजें पूछी जा सकती है. We should know about it. Then Vande Bharat train से. So we will study about Vande Bharat in a lot of details में, थोड़े और details में. So let's keep it here for now. But we know about Vande Bharat train. These are faster trains which have been initiated in 2019. Initially, it was initiated on 2 routes, but now more than 6 routes are being covered under Vande Bharat. Then electrical electronic interlocking system. So can someone tell me what is this electrical electronic interlocking system? Electrical electronic interlocking system. Anyone who would want to give? किसी का रेलवे का थोड़ा बैकग्राउंड नहीं? देखो, this is nothing, simple तरीके से समझो. This is digitization. Electrical electronic interlocking system is digitization of the transportation mechanism so that things could be fast tracked, signaling system could be fast tracked, and there are less chances of accident, less chances of delays. That is electrical electronic interlocking system, which is also being increased. More and more stations, more and more areas are covered by. Then development of hyperloop technology. Hyperloop technology. Now, what is hyperloop technology? पहले ये समझते हैं. देखो, in science and technology, we studied this, no, sonic boom. Did we study sonic boom? So when a plane is moving at a speed more than the speed of sound, it would create sonic booms, and those sonic booms would be problematic. Now, airplanes ka speed is limited by this.
Otherwise, airplanes would have been faster. Okay, so now पहले Elon Musk had given this idea कि we will create what is called hyperloop. We will create hyperloop transportation mechanism. Now, what is this hyperloop? What is this hyperloop transportation mechanism? Under this, they will be creating a tunnel. They will be creating a tunnel, long tunnel connecting two cities which are far, far away. This tunnel would have not completely vacuum, but would have a kind of vacuum kind of situation. And under this, inside it, vehicles or hyperloop में जो vehicles develop करेंगे would be moving at a speed much higher than the speed of airplane or any other thing. So Delhi से Mumbai travel करना would be much faster. In India, it's not going to develop very soon. अभी तो it hasn't been developed anywhere in the world. It's still in conceptualization phase, and various technology tests are happening. So what is Indian Railways do? Indian Railways knows कि not right now, but 20 years down the line, we may have to work on this. We may have to start working on these kind of technologies. So right now, they have started a small project with IIT Madras in collaboration with IIT Madras for developing Hyperloop technology by setting up Center of Excellence for Hyperloop Technology at IIT Madras with an investment of 8.34 crore rupees. So Hyperloop समझ में आया, एक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है where in this tunnel a magnetically leviated vehicles would be moving at a speed much higher than the speed of the current trains, or in fact planes also, so they would be much faster. This technology is being developed throughout the world. Research is going on. India में उसके लिए Center of Excellence has been developed at IIT Chennai, IIT Madras. Got it? ये वाला पार्ट तो इंडियन रेलवेज के कोलैबोरेशन में ये अगेन आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर यू फॉर प्रीलिम्स. जो भी छोटी मोटी चीजें हो, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में हो, बजट में हो, पीआईबी में हो, कुछ भी हो, वी शुड लाइक हमारे आंखों के नीचे से गुजरा होना चाहिए, so that when it gets asked in the examination, and even if you have not revised it, वैसे तो you will be revising it a lot of times, but even if you haven't revised it and you see 4 options, ISC Bangalore, IIT Chennai, so you'll be like, हाँ शायद IIT Chennai में, because we have studied it once. Okay, then Kisan Rail Train. Kisan Rails were introduced in FY21. So idea of like हमें अभी एग्रीकल्चर करना बाकी है, डिटेल वाला एग्रीकल्चर. वी हैव कवर्ड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वाला एग्रीकल्चर, बट वी विल कवर agriculture in detail. There will see that one of the core problems that farmers face is a poor transportation and storage facilities. Because of that, a lot of food gets wasted. So Kisan Rail initiative was launched by government, where trains were dedicated for एग्रीकल्चरल क्रॉप. उनका मूवमेंट आसान हो पाएगा, उनका एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट तक जाना आसान हो पाएगा. दैट इनिशिएटिव इज किसान रेल. So up to 31st October 2022, Indian Railways have operated 2359 Kisan Rail services, transporting around 7.9 lakh tons of perishable, including fruits and vegetables. The Economic Survey of India had talked about this aspect. Okay, so this generally, if you will go to your seniors who have cracked this examination in 2015 or 16, उस टाइम तक क्या होता था ना कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में जो बॉक्स बने हुए हैं उससे क्वेश्चंस आते थे प्रीलिम्स में, एंड देन योर मेंटर और योर सीनियर वुड से कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में पूरा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ो ना पढ़ो, बट जो बॉक्सेस में चीजें दी हुई हैं वो यू शुड स्टडी. So this was one of the boxes. I have just copy pasted the entire box in your notes and have given you some idea too. Okay, now we'll go to National Rail Plan. So Indian Railways have also come up with a plan ki what are we targeting for future by 2030, what are the things that we want to achieve. So what will they say कि भाई हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करनी है ना, अपना कवरेज बढ़ाना है, फ्लाइट एंड ऑल. यू आर आस्किंग समथिंग कपिल? हाँ, फॉर बोथ पेरिशेबल
अरे नहीं, इट्स नॉट सेड ओनली पेरिशेबल ना, पेरिशेबल इट इज लिखा है कि क्योंकि देखो पेरिशेबल्स आर द थिंग्स जिनका ट्रांसपोर्टेशन फटाफट करना बहुत जरूरी है। गेहूं का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा डिले भी हो जाएगा, इट वोंट बी दैट प्रॉब्लम, एंड देयरफॉर पर्पस वाज पेरिशेबल, बट नॉन पेरिशेबल थिंग्स कैन आल्सो मूव। पर्पस वाज कि किसान रेल के थ्रू पेरिशेबल फटाफट मूव हो जाए। नाउ कम बैक टू national rail plan. So national rail plan, you would see, is formulating strategies based on operational capacity and commercial policy initiatives to increase modal share of railways in freight. तो फ्राइट मूवमेंट हो रहा है, फ्राइट ट्रैफिक का जो मूवमेंट हो रहा है उसमें दे टारगेट टू इंक्रीज द शेयर ऑफ रेलवे, कितना इंक्रीज मॉडल शेयर ऑफ रेलवेज इन फ्राइट टू 45%, currently it's 26-27%. most of the freight is being transported by truck, roads, roadways, so they want to increase it to 45%. नितिन गडकरी जी को रेलवे मिनिस्टर बना दिया जाए तो वो कर भी देंगे, right? Otherwise the way he is working on roadways, they will not have a scope of, in spite of the fact that railway se transportation is cheaper, it is much environmentally beneficial, it can be faster as well, but Nitin Gadkari would ensure कि roads are much faster, right? So that is one thing कि हमारे रेल प्लान में क्या है. दूसरा, increasing average speed of freight traffic trains to 50 kilometers. Increasing average speed of freight trains to 50 kilometer per hour. अभी it's around 30 kilometer per hour. जो माल गाड़ी होती है ना, it goes very slowly. You may sometimes see it moving very fast, but the average speed is very less. तो टारगेट इज वी विल इंक्रीज दैट. तो फ्राइट ट्रैफिक का मोडल शेयर, अलग अलग मोड से ट्रैवल कर हो सकता है, फ्राइट कैन बी मूव्ड, so they want to increase the share of railways. Then under this they have also launched a vision 2024. What are the things that we want to achieve by 2024 has been included as part of vision 2024, where you will see things like 100% electrification. हमने बोला रेलवे ने ऑलरेडी 2023 का टारगेट रखा हुआ है, we had studied it somewhere. Okay, multi-tracking of congested routes which are congested, there should be multiple tracks so that multiple upgradation of speed to 160 km per hour for Delhi Howrah and Delhi Mumbai routes, upgradation of speed to 130 km per hour on all other golden quadrilateral and diagonal routes, and elimination of all level crossing on golden quadrilateral and golden diagonal. Fine. गोल्डन क्वाड्रिलेटर, डू यू अंडरस्टैंड? वो रोडवेज वाला, वहां से देखो दिल्ली से कोलकाता रोडवेज से कनेक्टेड, दिल्ली से कोलकाता ट्रेन से भी कनेक्टेड है, पर दिल्ली टू कोलकाता एंड दिल्ली टू मुंबई दे आर टारगेटिंग टू मेक इट गो टू 160 किलोमीटर पर आवर. रेस्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटर, जैसे मुंबई टू चेन्नई 130 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पॉसिबल होना चाहिए उन रूट पे. This is the vision for 2024. Then there are some general things. Identify new dedicated freight corridors. We already have 2 dedicated freight corridors. Identify new ones. Assess rolling stock requirement for passenger traffic as well as wagon requirement for freight. Assess locomotive requirement to meet twin objectives of 100% electrification and increasing freight modal share. देखो locomotive requirement, if we electrify our trains, then the locomotives which used to work on non-electrified trains would not work here. So increasing that and increasing freight to increase a modal share of freight. To increase railway share of freight traffic will need more malgadis. So more locomotives would be needed. They're talking about all those aspects. Assess the total investment in capital that would be required. Sustained involvement of private sector also in areas like operations and ownership of rolling stock, development of freight and passenger terminal, etc. These are, देखो ये बाकी सारी चीजें तो जब ऑप्शंस में आएगा विल बी लाइक हाँ होना चाहिए, ठीक है. देयर आर सम टारगेट्स दैट वी शुड हैव इन आवर माइंड. व्हाट टारगेट्स? 45% मॉडल ट्रैफिक अचीव करना है, वो वाला टारगेट, एंड देन स्पीड बढ़ानी है ना, speed to 50 km per hour. These targets, these are some things which will not be very obvious unless you know it. Fine. So this was National Rail Plan 2030. बेटा आपका जब ट्रेन्स मूव, लाइक जब फ्राइट ट्रैफिक बढ़ेगा तो यू विल नीड मोर railway lines, you will need more locomotives, you will need all those. तो उनके रिक्वायरमेंट को असेस करना, एंड यस
रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवेज। आपको पता होगा कि IRMS आ गया है ना? दैट इज दैट रीस्ट्रक्चरिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। It was announced last year in February 2022 that all the 8 railway services are merged into IRMS. But उससे भी पहले what was the need of it? देखो, earlier before the new system has come into play, the highest decision making body of Indian Railways was Railway Board. Railway Board had a chairperson and it also had 7 members from 7 different departments. So Railway Board had बोल रहा हूँ मैं, हाँ, had a chairperson, the highest decision making body of railways had a chairperson and 7 members who were heading 7 departments. And these 7 departments were vertical, who were not interacting properly with each other, who were competing with each other. And every department head and every department wanted more resources for them. Rather than working together for the entire railway, rather than coordinating effectively for the entire railways, there was always a power struggle going on, which was negatively impacting the performance of Indian Railways. Every time there would be a fight over who would get more budget. Everyone would assume that my department is more important. It was creating problems. And over the years, several. So before we go to committees, management and administrative arm of the organization was staffed by 8 Group A service of Indian Railways, जैसे Indian Railway Traffic Service, Indian Railway Account Service, Indian Railway Personnel Service. These were 3 services जो UPSC Civil Services के थ्रू जिनका सिलेक्शन होता था. Then there were services like Indian Railway Service of Engineers, Indian Railway Service of Mechanical Engineers, Indian Railway Service of Signal Engineers, Indian Railway Service of Electrical Engineers. तो ये 5 सर्विसेज ऐसी थी जिनके इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू सिलेक्शन होता. Okay, so these departments were manned by this accounts department. So Indian Railway Account Service officers would be the senior most officers there and so on. But वही over departmentalization was creating the problems that we just discussed. So एक committee बनी थी, Vivek Debroy committee. It gave its report in 2015 and it highlighted this unhealthy competition and called for integration. In fact, not only Vivek Debroy committee, but Prakash Tandon committee in 1994, Rakesh Mohan committee in 2004, Sam Pitroda committee in 2012, Vivek Debroy committee in 2015, all of them have suggested unification of services and government finally listened in 2019. In 2019, Union Cabinet approved restructuring of Indian Railways. Now the board will have a chairperson and 5 members, but these 5 members will not be like head of 5 different departments. Head of 5 vertically separated departments. They will be heading, they will be responsible for infrastructure, operation and business development, rolling stock and finance, but it would not be that much in scale. The 4 members will head these 4 functions. Total number of members would be 5, a chairperson and 4 members. The 4 members will head the 4 functions. The board will also consist of independent members who will be distinguished professionals from various sectors. Group A services, 8 Group A services were there. All of them have been integrated into a single service, Indian Railway Management Service. And last year in February 2022, the Union government officially in Gazette notification also announced this service. Post of general managers working at zonal level will be upgraded to secretary level. Now, we had just seen zonal zones थे, फिर divisions थे. So post of general managers who are heading the zone were going to be upgraded to secretary level. Indian Railway Medical Service will be now called Indian Railway Health Service. Why? IRMS तो management service हो गया ना, तो confusion भी avoid होगा. It will be called Indian Railway Health Service. So advantages क्या क्या होंगे? Ending departmentalism, creating coherent vision for organization, promoting faster decision making, recruiting engineers, non-engineers as per need, bring decision making as per market realities, infusing fresh thinking into the system rather than the old departmental bureaucratic method of work. Okay, now when we will study this for mains examination, we will talk about some problems also, but समझो pre-may it's not going to be useful. So pre-may just understand what is happening
and why it is happening, what were the problems because of which it is happening. Fine, सब लोग कंफर्टेबल हैं. नाउ जैसे अभी हमने विवेक देब्रॉय कमेटी देखी ना, विवेक देब्रॉय कमेटी वाज फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री एंड रेलवे बोर्ड. हमने देखा उनका रिकमेंडेशन रीस्ट्रक्चरिंग पे था. ऐसे ही अनिल काकोडकर कमेटी था एक, विच वाज ऑन द सेफ्टी, रेलवे सेफ्टी. तो ये कमेटी के नाम याद रख लीजिए कि ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट राकेश मोहन कमेटी, श्याम पित्रोदा कमेटी. तो प्रीलिम्स में आ जाएगा ना इनमें से कौन सी कमेटी रेलवे से एसोसिएटेड है. तो वी शुड बी नो, बिकॉज वी हैव रेड देम वंस. अभी आप राकेश मोहन सुनोगे तो यू विल बी लाइक हाँ सुना सुना तो है, शायद रेलवेज में पढ़ा हो. तो वैसे विल बी एबल टू अटेम्प्ट. फाइन, बातें समझ में आ रही है. देखो यहाँ समझाने का ज्यादा कुछ नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी कैन गो क्विकली. इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी, अभी इन 2022 इट हैज बीन अनाउंस्ड. इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी, स्टार्टअप फॉर रेलवे, स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज इनिशिएटिव है. नाउ व्हाट इज दिस स्टार्टअप फॉर रेलवेज इनिशिएटिव? देखो, and through this what Indian Railways is trying to do is, there are startups which are doing innovative work. Can they not solve some of the problems of railways? So Indian Railways have highlighted some of its core problems and have invited startups, come and solve our problems. If you get selected to solve some of our particular problems, we will also fund you. A part of your, we will be funding you, we will be providing you some capital for coming up with innovative solutions for these problems. तो प्राइवेट सेक्टर में जो इनोवेशन है, स्टार्टअप्स में जो इनोवेशन है, उनको मोबिलाइज करना है फॉर सॉल्विंग सर्टेन प्रॉब्लम्स विद रेलवेज. दिस इज स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज इनिशिएटिव. डिड वी अंडरस्टैंड द कोर आइडिया? अभी विल लुक एट व्हाट इज रिटन हियर, बट स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज का कोर आइडिया समझ में आ गया. Now, see what is being done here is, through this platform, startups will get a good opportunity to connect with railways. 11 problem statements like rail fracture, headway reduction have been taken from phase 1 of this program. These will be presented before startups to find innovative solutions. The railways will give startups 50% of the capital grants, assured market, because if they're able to solve the problem, railways would be able to provide them market and scale and ecosystem. Grant of up to 1.5 crore can be given to innovator on equal sharing basis with provision of milestone wise payment. That is, if the startup is investing 1.5 crore rupees in that particular technology, railways can also up to 1.5 crore rupees invest. But railways will not give you 1.5 crore at the first phase. It would be on the milestone wise basis, like if you achieve certain aspects, if you achieve next stage, in same way you'll be allocated this money. Complete process would be online so that transparently startups would be chosen. Trials of the solution would be done by railways. Railways would decide whether a solution is useful or not. Enhanced funding will be provided to scale up deployment on successful performance of the prototype. If in test those startups have been able to solve some problems, then they can be given more funds to scale up their contribution. Selection of innovators will be done by transparent and fair system, which will be dealt through online portal inaugurated by Ministry of Railways. Developed intellectual property rights would be, IPR जो अर्न करेंगे वो प्राइवेट प्लेयर का ही होगा, वो स्टार्टअप का ही होगा, रेलवेज का नहीं होगा. Remain with the innovator only. Assured developmental order would be there, and decentralization of complete product development has been done at divisional level to avoid delays. These are certain other aspects which are there. But startup for railways वाला concept समझ में आया, core idea समझो. Okay. भारत गौरव. Any doubts? No. I think it should be statutory. है ना, एक बार देख लेंगे, मेरे को एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, एक बार फिर भी कंफर्म कर लेंगे. भारत गौरव. भारत गौरव क्या है? भारत गौरव देखो, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस इन इंडिया विच आर कल्चरली वेरी सिग्निफिकेंट. लॉट्स ऑफ रूट्स विच आर कल्चर, जैसे भगवान राम के रीजन्स हैं जहाँ पे देर आर लॉट्स ऑफ टेम्पल सिचुएटेड इन दैट रीजन, और बुद्धिस्ट सर्किट हो सकता है ना, इस तरह के सर्किट. तो अंडर भारत गौरव प्रोग्राम, गवर्नमेंट हैज आस्क्ड प्राइवेट प्लेयर्स, you run trains,
and provide good services on these important. Will lease you trains. If you want to lease trains, you provide services, you determine fee, you determine what kind of uh, uh, options you'll provide to tourists, how you'll make their life comfortable, what should be the fare, price कितना होना चाहिए, you determine all that. But to this, government is trying to ensure that on these important cultural places there would be good quality services available. इसे ऐसे समझिए कि जैसे when you travel from by bus from Delhi to Jaipur, so there are private buses which provide you the kind of services which government will not be able to. और वो ज्यादा पैसे भी चार्ज कर रहे होते हैं, हम दे रहे होते हैं. So in this way, in trains also, this could be, this should be doable. That is Bharat Gaurav scheme. These trains will be operated by private players, run on theme-based circuits. These trains will have a help in showcasing India's rich cultural heritage and historical places. The core strength of the professional of tourism sector would be leveraged to develop develop or identify tourist circuits and run theme-based trains to tap tourism potential here. तो नाउ देखो, ट्रेन्स प्राइवेटली ओन्ड हो सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर एक ट्रेन को लीज कर सकता है, बट रेलवे लाइन को तो उसे परमिशन ले, वो रेलवे लाइन तो गवर्नमेंट की होगी, तो operators will get right to use of its rakes and infrastructure. The railways has liberalized and simplified a part of operations that was otherwise carried out mostly by IRCTC. Under the scheme, the private players tour operators can procure trains from railways on lease and operate them on any circuit of their choice and decide fares, routes and quality of Bharat Gaurav. Did we understand? Okay. Now Ritu is asking, sir, what is meant by assured developmental order? आपका अगर प्रोडक्ट वो हो जाता है सक्सेसफुली, ये शी हैज गॉन बैक टू द ओल्डर टॉपिक, या मैंने वो डाउट्स देखा नहीं होगा जब उन्होंने बोला होगा. स्टार्टअप फॉर रेलवेज वाला जो इनिशिएटिव था, अगर आपका प्रोटोटाइप इज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय रेलवेज, then you are definitely going to get orders from railways. That is what they were talking about. Anyways, did we understand Bharat Gaurav initiative? Private players running trains on theme-based circuits, theme-based corridors. तो उन ट्रेन्स को ऐसे भी किया जा सकता है कि सपोज बुद्धिस्ट सर्किट वाले रीजन में ट्रेन रन हो रहा है, द ट्रेन कैन बी पेंटेड विथ बुद्धिस्ट एस्पेक्ट्स, द फूड दैट मे बी अवेलेबल, the trains may be showing some movies or something like that related to Buddhism. ना जो ट्रेन्स अयोध्या जा रही होंगी, दे कैन बी पेंटेड इन अदर वेज. वहाँ पे फूड चॉइसेस ऐसे हो सकती है कि मान लो वेजिटेरियन हो पूरी food choices, those kind of things could be there. So that specialized thing could be provided by private players in these Bharat Gaurav. Then there are some more initiative. Vande Bharat Express. So Vande Bharat are semi high speed. We don't call them high speed. हाई स्पीड वो बुलेट ट्रेन को हम बोलेंगे हाई स्पीड. हमने देखा हाई स्पीड हम कहाँ प्लान कर रहे हैं, मुंबई टू अहमदाबाद, है ना. तो सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई. इसे एक ध्यान रखना कि जो वंदे भारत के ट्रेन है, इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटीग्रेटेड आईसीएफ चेन्नई with indigenous efforts and turned out as Vande Bharat Express. These are trains with ultra modern features. For example, quick acceleration, substantial reduction in travel time, maximum speed of 160 kilometers per hour, on board infotainment, information और entertainment को infotainment बना दिया है इन्होंने. GPS based passenger information system, automatic sliding doors, retractable footsteps, zero discharge vacuum bio toilet, CCTV cameras, etc. Has anyone of you traveled on वंदे भारत अभी तक? आप लोगों ने सबने ट्रैवल किया है, तो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज फीचर्स बेटर. आर दे गुड? आर दे रियली गुड? ना खाना अच्छा मिलता है? आपके भूखे टीचर को खाना ही. तो अभी कौन कौन से रूट पे है नहीं बताता हूँ. टू वंदे भारत ट्रेन्स आर रनिंग बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाराणसी एंड न्यू दिल्ली एंड श्री माता वैष्णो देवी कटरा. देन देर आर मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल, न्यू दिल्ली से ये क्या है, अंडोरा. वेयर इज दिस प्लेस? अरुणाचल. ओके. हिमाचल. ओके. देन चेन्नई, मैसूर, नागपुर, बिलासपुर. दीज आर द रूट्स. तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं वाराणसी जा सकता हूँ,
वैष्णो देवी। एंड देन ये भी अच्छा लग रहा है, ये कौन सी? हिमाचल है, पहाड़ है, चले जाऊं। परसों दिल्ली भोपाल, हाँ यस यस, वही तो न्यूज में थे। हाँ ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा, एक और ऐड कर लो। मुंबई शिरडी भी चालू हुआ है, राइट। ओनली सीटिंग है पर, हाँ तो बैठेंगे यार। हाँ हाँ बैठेंगे ही। और ये कहाँ है, कौन सी जगह है ये? एम्ब अंदौरा, हिमाचल पक्का ना? यहाँ जाएगा भाई मई मई में। तुम लोगों का 30 अप्रैल को कोर्स खत्म करके भाई गायब हो रहे हैं। मैं भी तो मेंस की तैयारी करूंगा ना, आप लोगों के लिए। है ना, ऐसा होना चाहिए ना कि आप 5 जून को प्री दे के आओ, एक वीक बाद। अच्छा हाँ 28 मई को, आप 28 मई को प्री वही दे के आओ, और अब बोलो कि सर 4-5 दिन क्लास नहीं लेना। मैं बोलूंगा बेटा फ्राइडे को वापस आ जाओ, आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, मैं 1 महीने पढ़ के आया। मैं तो पढ़ के आऊंगा तो मुझे देखो, मेरे को ना जब क्लासेस वगैरह बहुत सारी होती है ना, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो मजा नहीं आता। दिस टाइम मैं पूरा सिलेबस लेके, सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन लेके बैठ के सबके नोट्स रेडी रखने की कोशिश करूंगा, ताकि आते ही आपको पढ़ना शुरू कर दें। है ना? तो योर योर मेंस, आप में से ज्यादातर लोग तो प्री कम मेंस बैच वाले हो, है ना? जो टारगेट प्री वाले हो वो भी मेंस वाला बैच ज्वाइन कर लेना, एंड विल वेरी क्विकली स्टार्ट दैट थिंग। दिल्ली टू जयपुर भी है तो जयपुर जाएगा, जयपुर इज अ गुड, मतलब आई वेंट टू जयपुर समवेयर इन दिसंबर। दिल्ली का पोल्यूशन लेवल और जयपुर का पोल्यूशन लेवल, दिल्ली में 400 प्लस था और जयपुर में पहुंचे 130 140। दैट वाज आल्सो नॉट दैट ग्रेट, बट सोचो ना, आप दिल्ली के 400 AQI 400 से निकल के 4-5 घंटे में 130 पे पहुंच गए, तो इट वाज वेरी गुड। एनीवेज, अनदर ट्रेन विस्टा डोम ट्रेन। ये विस्टा डोम ट्रेन कैसी हैं? लार्ज विंडोज एंड ओपन नहीं है भाई। ओपन नहीं है, ग्लास सीलिंग, panoramic view through wider body side windows and through transparent section of the roof। ओपन रूफ नहीं है। बरसात में क्या पानी कलेक्ट करोगे? सॉरी। तो thus enabling the passenger to enjoy the scenic beauty of the places through which they travel। तो जनरली जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल, फॉर एग्जांपल यू सी द फर्स्ट वन, इंडियन रेलवे स्टार्टेड अ 7 कोच ग्लास एनक्लोज विस्टाडोम ट्रेन ऑन कालका शिमला रूट। तो आप यहाँ पे नहीं चाहोगे कि एकदम बंद से ट्रेन में, खुले खुले में देखोगे, है ना? तो दिस इज विस्टाडोम। As on November 2022, 82 Vistadome coaches are available over various sections of Indian Railways। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में ही था ये, that's why the update I have given, otherwise it was launched in 2019 तो would not have covered it। Then कुछ रेलवे सेफ्टी रिलेटेड मेजर्स आर आल्सो देयर। प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, तो ये तो हमने आपको समझाया व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। देन कवच टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। Indian Railway has developed Kavach or automatic train protection system. Now, what is this? This is a system which has different dimensions. For example, suppose a train का speed बढ़ गया and driver is not controlling it. This system will automatically reduce the speed. It will control speed of train by automatic application of brakes. Repeat line side signal in cab। तो ट्रेन में ना आप अगर रेलवे लाइन पे जा रहे हो तो आपको लाइन साइड पे सिग्नल्स दिखते हैं। दो सिग्नल्स वुड बी रिपीटेड ऑन कैब, अदरवाइज व्हाट हैपेंस कि धुंध हो रखी है या फिर वो, तो द ड्राइवर इज नॉट एबल टू सी दोस सिग्नल्स, so those signals would be repeated within the cabinet, within the cab of the driver। Then works on principle of continuous update of movement authority, auto whistling at LC gate, collision avoidance by direct to loco communication, supports feature of SOS in case accident ho gaya, it's for accident avoidance, but in case accident ho gaya then they have SOS mechanism also to control train in the vicinity, to inform the train in vicinity and to control the train in vicinity। Those kind of things are also there under Kavach। So Kavach is a anti-collision mechanism developed by, fine, Kavach wala aspect। Then
ऑपरेशन आहट, आहट may not be the right word, अब मैं इसको बोल रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नो द, वही होगा आहट। तो वो सोनी पे वो आता था ना बचपन में, आप सबने देखा है? आप सब मेरे टाइम में बच्चे थे क्या? मेरे को लग रहा है ऐसे 10-12 साल का गैप होगा। सबने आहट देखा है? किसने नहीं देखा? कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग अपने आप को यंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव क्यों नहीं देखा तुम? मतलब अच्छा, यू डोंट लाइक हॉरर मूवी? कटेगा। Anyway, let's come back. So, under Operation Ahad, teams were deployed on all the long distance trains, focused on rescuing victims, particularly women, children from clutches of traffickers. So, this was an anti-trafficking initiative where teams were deployed to identify the people who would be getting trafficked, especially women and children. ऐसे बहुत सारे ना इनिशिएटिव रेलवे लॉन्च करता रहता है। फाइन, बस इतना ही। तो एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन आहट, द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क ऑफ द फोर्सेस कुड बी यूटिलाइज्ड टू कलेक्ट, कोलेट एंड एनालाइज clues on victim, source, route, destination, all these kind of initiatives. Then there are some other initiatives by railways, जैसे first indigenously manufactured aluminum freight train rake inducted in railways. अब देखो aluminum is cheaper, sorry, aluminum is much lighter, है ना? तो अगर एक engine has been developed to pull certain weight, if we use aluminum के डब्बे, so it will be able to carry more product in it because its own weight would be lighter, right? So that is something that has been done. Key features देखोगे, it is lighter, more freight carrying capacity because it's lighter, so more weight of freight could be there. Corrosion resistance, जैसे iron तो corrode होता है ना, aluminum is corrosion resistant. Lower carbon footprint. Why? Because in the same, it's able to carry more weight, so less number of less transportation would be required. It itself is lighter. So this indigenously manufactured aluminum freight train, India's first indigenously manufactured aluminum freight train, was made in collaboration with Besco Limited Wagon Division and Besco Limited का Wagon Division and Aluminium Major Hindalco. इन दोनों ने मिलके ये aluminium वाला freight train बनाया है. Then one station, one product scheme. This one station, one product scheme was announced in last year's budget, not this year's budget. What was the idea? That on railway stations, provide specialized places where artisans of that area would be able to sell their specialized product. कोर आइडिया समझ में आया? तो इससे इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट भी हो जा रहा है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट भी हो जा रहा है, कल्चरल चीजों को भी प्रमोट किया जा सकता है. तो the scheme aims to provide opportunities for enhanced livelihood through skill development to local artisans, porters, weavers, craftsmen, etc. through provision of sale outlets at railway stations across the country. Sale outlets at railway station across the country. So initially pilot project में March 2022 में last year 19 stations पे 15 दिन के लिए these kind of outlets were created. Eventually after this learning it would be extended throughout the country on all the important stations. अब वो स्टेशन जहाँ पे गाड़ियाँ आती नहीं, लोग आते नहीं, तो वहाँ पे आर्टिसंस को बिठा के ज्यादा मतलब नहीं है, बट ऑल द इम्पोर्टेंट स्टेशन में दिस वुड बी एक्सपैंड. वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव ऑफ इंडियन रेलवे. बात समझ में आई? देन some of the bridges, some of the railway bridges were in use. Pamban Bridge connects mainland Tamil Nadu with Rameshwaram Island. So it connects Mandapam to Rameshwaram Island. Now Pamban Bridge has been there for long. जो अभी जो bridge है, the existing Pamban Bridge, it was developed in 1914. In 1988, it was the only link which connected the two locations when a new road bridge was built parallel to this sea link. Okay, but now what is being developed? A new bridge is being developed. This will be India's first vertical lift railway sea bridge. What is meant by vertical lift railway sea bridge? Anyway, Chenab Bridge, ये भी अभी न्यूज में था.
March 2000, world's highest railway bridge over Chenab River in J&K to be operational soon. This bridge, ये नीचे जो रिवर वैली है उससे लगभग 350 मीटर की हाइट पे, 359 मीटर, समझ रहे हो? जस्ट इमेजिन 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 300 मीटर, बहुत दूर होगा। तुम पीछे क्या देख रहे हो? तुम्हें तो पीछे देखेगा 300, वो पीछे मुड़ के देख रहा है 300 मीटर, 300 कहाँ जाएगा? तो एनीवेज, तो Indian Railway is constructing this iconic arch bridge. You see this bridge, arch bridge on River Chenab as part of Udhampur Srinagar Baramulla railway link, which will connect Kashmir with rest of the country. Its height is 359 meters above the bed of Chenab River. The bridge is 35 meters higher than the Eiffel Tower in Paris. From the base of the river, it's higher than the Eiffel Tower as well. The 1.315 kilometer long bridge is being constructed at a cost of 1500 crores in April 2021. इसका जो आर्च वाला पार्ट था ना, that was completed in 2021, April 2021. It's going to be operational soon. Now, making this arch was very complicated because it does not have pillars. नीचे pillars नहीं है ना, pillars नहीं हो सकते because 359 meter, 360 meters length का pillar would be very unstable, right? And therefore constructing this was difficult. But now, no pier could be used as the river is 359 meter below, and no pier could possibly commit a height like that. Arch consists of steel boxes which will be filled with concrete to improve stability. There are other key features here. It will be able to withstand high wind speed to 266 km per hour तक का. The bridge is also designed for blast load in consultation with DRDO for the first time in India. Blast load why? टेररिस्ट वगैरह, टेररिस्ट अटैक वगैरह होने के चांसेस कम हो, वो से सर्वाइव कर जाए. देन इट कैन ऑल्सो विथस्टैंड अर्थक्वेक फोर्सेस. हिमालयन रीजन में या दे कम इन जोन 5 और जोन 4 वाला एरिया, तो अर्थक्वेक शुड ऑल्सो नॉट बी एबल टू डैमेज इट. इट शुड बी एबल टू विथस्टैंड दैट अर्थक्वेक. तो अभी न्यूज में था कि इट विल बी ऑपरेशनल वेरी सून. वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ओवर चिनाब रिवर इन J&K विल बी ऑपरेशनल. फाइन. This is world's highest railway. So railways are related. They all these small things. We should browse through it. We should have an idea when we hear the term startup for railways, what is happening under it. When we hear about Chenab or this vertical lift bridge for the first, Pamban vertical lift bridge, we should know कि हाँ ये तो हमें आता है. In exam, if these questions come, we'll be able to attempt. I'm not saying these questions would come, है ना? I'm not saying that. But अगर आएगा तो we will be able to do it. We will be the best prepared. हम लोग सबसे अच्छे से prepare करके जाएंगे. If we are not able to do a question, then no one would be able to do that confidence. We will. अगर हमें पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमें नहीं हुए, we will not get panic because we are the most prepared. इतना इंडियन रेलवेज किसी ने नहीं पढ़ा होगा, आई प्रॉमिस यू. लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेक्शन कवर करते हैं, दे विल कवर अ फ्यू टॉपिक्स, बट इतनी सारी चीजें रेलवेज की नहीं पढ़ी. ओके, नाउ एयरवेज. एयरवेज में देखो, एयरवेज में देयर इज डिफेंस वाला एयरवेज, तो वो वी स्टडी इन डिफेंस वाला सेक्टर. हियर विल स्टडी अबाउट सिविल एविएशन. हाँ बताइए. सॉरी, हाँ देखो, तो मैं आपका नाम भूल गया. Anish. Anish is asking a question. We earlier we used to talk about operational cost of railway and all. See what has happened over the years. पहले ना बहुत सालों तक जो पैसेंजर ट्रेन्स का जो कॉस्ट था ना, इट वाज केप्ट वेरी स्टैग्नेंट. एंड प्राइड से तो रेलवेज वाज अर्निंग मनी, बट इट वाज पैसेंजर ट्रैफिक व्हिच वाज लॉस मेकिंग. So what has happened over the years? We would see increase in price. आप दिल्ली टू मुंबई राजधानी से जाओ, the cost have more than doubled, which was not happening for many years.
हाँ, situation has improved. Moreover, with stricter measures, now without ticket, people have also reduced. There are more stronger implementation of these kind of mechanisms. है ना? साहिल मुझे ऐसे गुस्से में देख रहा है, सर मैं तो अभी विदाउट टिकट ट्रैवल कर लेता हूँ। आप हमारे एरिया में आओ तो आप मतलब दोस्त करते हैं? हाँ, इसके एक्सप्रेशन से ही लग रहा था सर मेरे दोस्त कर ले। अच्छे हो, आप तो अच्छे बच्चे हो। हाँ, नालायक, झूठे। मैं भी अपने दोस्तों के नाम ले लेके अपनी सारी बुरी आदतें बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसने एक दिन प्रिंसिपल को पत्थर मार दिया। नहीं, मैंने नहीं मारा। अरे मैं अच्छा, तुम्हें लगता है मैं ऐसे वायलेंस वायलेंस में बिलीव करूंगा? नहीं ना, मैं सीधा बच्चे ये ठीक है, मुझे घूर रही है ऐसे। सर ने ऐसा किया होगा कि नहीं, एकदम ही जज कर रही है। ठीक है, व्हाट डिड यू कंक्लूड? नथिंग। पता नहीं चला मैंने किया होगा कि नहीं किया होगा। क्या होगा? नहीं नहीं, एक मन था पर करा नहीं। हाँ, वो तो दोस्त था यार, वो दोस्त। नहीं नहीं, मैं ऐसे काम नहीं, मतलब आई एम वेरी सेंसिटिव टू दीज थिंग्स। मुझे थोड़ी भी मतलब इग्नोर, कम बैक। हाँ मतलब एनी बैड स्मेल, वो गुटखा तंबाकू वाले जो लोग होते हैं ना, उनके पास जाके मुझे वॉमिट आ जाता है। तो ये रियलिटी है, मतलब इट्स आई एम दैट सेंसिटिव। तो फॉर मी ट्रैवलिंग समटाइम्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली इफ समवन इज स्मोकिंग अराउंड मी और समवन इज हैविंग गुटखा अराउंड मी। आई एम लाइक, मुझे उतार दो अभी बस से। अगर रोडवेज बसेस में कभी आपने ट्रैवल किया होगा, तो देयर वुड बी पीपल अराउंड यू हु विल बी ईटिंग सम। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्रैवल्ड इन रोडवेज बसेस, रिच पीपल। लाइक दिल्ली टू भिवाड़ी, पहले मैं जब स्टूडेंट था तो रोडवेज बस में जाता था, और वो 1.5 hours यूज टू बी टॉर्चर। तो आई फर्स्ट यूज टू गो टू गुड़गांव बाय मेट्रो, सो दैट बस आगे का 1 घंटा और बस से जाना पड़ेगा, तो देयर वुड बी लेस स्कोप ऑफ दैट। राइट, अब मैं ओला से जाता हूँ कि मुझे रिस्क लेना ही नहीं है। और उसमें भी ड्राइवर को पहले कॉल, व्हेन ड्राइवर कॉल्स आई टेल दैट ड्राइवर कि भैया, आप अगर गुटखा उटखा खाते हो, वो स्मेल आ रही होगी तो मैं नहीं बैठूंगा, मैं कैंसिल कर दूंगा। ओके, लगता है सर कभी कोलकाता नहीं गए। कोलकाता में क्या होता है सबसे ज्यादा? हावड़ा ब्रिज पे क्या है? कम बैक टू सिविल एविएशन पॉलिसी। सिविल एविएशन पॉलिसी, जो इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम केम अप विद सिविल एविएशन, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी इन 2006। अब अभी हमने नेशनल रेल प्लान देखा था ना, तो उसमें फ्लाइट ट्रैफिक बढ़ाने की बात करी जा रही थी। सिविल एविएशन पॉलिसी में क्या बात करी जाएगी? हाउ टू इंक्रीज द कवरेज ऑफ planes, how to make more people travel, how to make our civil aviation sector more inclusive, that it's covering more region. These are the things that would be discussed in the policy. So देखो policy now, it's 7 years old, but I'm still briefly I want to look at 4 5 points so that in case this gets asked, because it's the policy which is in foresight, and even if it doesn't get asked, हम मेंस के टाइम के लिए तो प्रिपेयर्ड रहेंगे। सिविल एविएशन पॉलिसी के 5 पॉइंट्स हमेशा हमारे टिप्स पे रहेंगे। तो व्हाट आर द की थिंग्स? फर्स्ट वाज regional connectivity scheme that it brought. So we will study regional connectivity scheme in detail. Under this, government has subsidized what? Tier 2, tier 3 town से connection. So what is in India a lot of, यहाँ पे मैंने problems नहीं डिस्कस करी ना, ये शायद यहाँ पे डिस्कस करी होंगी। यहाँ पे some key problems in India's aviation sector: traffic concentrated between large airports. Delhi, Mumbai, Delhi, Chennai, Chennai, Mumbai. These large airports constitute most of the air traffic. Because of this, what happens? Look at the condition of Delhi airport. It's very bad. Like especially if you go to Terminal 1D, it's worse than railway station. At least on railway station you have multiple platforms. वहाँ पे when you have to go down the stairs, no, to reach the waiting area. आपको भीड़ देख के लगेगा कहाँ आ गए। This wasn't the case 10 years back. Now more people can afford travel, and air travel has not, uska cost has not gone up a lot. आज से like 10 years back when I was traveling from Delhi to Hyderabad, तब भी वो 3,500-4,000 रुपए लगे थे हमारे। आज भी दिल्ली टू हैदराबाद का अगर हम 1 महीने पहले टिकट करा लेते हैं तो 3,500-4,000 रुपए लग रहे हैं एयरप्लेन के, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो मोर पीपल आर ट्रैवलिंग,
वो, but they are mostly most of the travel is happening between big cities. And in the process, what is happening? Smaller towns like Kanpur or Lucknow or these smaller towns are not being served. So what happens? People from Kanpur would travel to Delhi, and फिर वो दिल्ली से मुंबई जाएंगे, और फिर वो मुंबई से will go to some nearby place. At least what we could have done कि कानपुर से या फिर नियरबाई प्लेस से मुंबई का तो एयर कनेक्टिविटी हो जाए. उस तरह की चीजें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर हो रही है. तो राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आर बिगर एयरपोर्ट्स आर चॉक्ड. Someone who has to travel, they have to come to these big airports, and these big airports are heavily crowded. Then there are lots of ghost airports. Before the regional connectivity scheme was started, there was this problem of ghost airports. What were ghost airports? These airports were created, but enough passenger traffic or those things could not happen, and now no flight was going there. Only during some special visit of someone, these airports would be activated temporarily, but otherwise these airports were ghost airports. तो इन चीजों से डील करने के लिए उड़ान और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम वाज ब्रॉट. Let's cover Udan first, regional connectivity scheme, because it is the first point under civil aviation policy that we are looking at. है ना, उड़ान और उड़े देश का आम नागरिक और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम. What is this? It's one of the key feature of national civil aviation policy. Under this, there is subsidization of regional flights to promote regional connectivity. जैसे दिल्ली टू शिमला, दिल्ली टू शिमला का फ्लाइट गवर्नमेंट वुड सब्सिडाइज, so that यहाँ पे सस्ते रेट में कनेक्टिविटी कुड बी अवेलेबल एंड मोर पीपल स्टार्ट फॉलोइंग दिस रूट. वंस मोर पीपल स्टार्ट फॉलोइंग दिस रूट, traveling between Shimla and Delhi by flight, it would become commercially viable. But initially, this subsidy would be given. And how subsidy is being given? It is through regional connectivity fund. And regional connectivity fund में पैसा कहाँ आ रहा है? जो नॉर्मल बड़े सिटीज के बीच में फ्लाइट चल रही है ना, उस पर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाएंगे, so that cross subsidization of the other part could be happening. On these routes, these RCS routes would be small. There would be small aircraft below 80 seats at a rate decided by ministry from time to time. At that rate they'll be providing service. Now suppose Indigo को contract मिला of running RCS or regional connectivity scheme flight between Delhi and Shimla. Let's say that is the scenario. In that case, Indigo makes a loss of 20 crore rupees, which let's say government has to pay. So 80% of the money would be given by central government and 20% by the state government. So state government will also have to contribute here. In case of special category state, that northeastern state, this ratio would be 90:10. Kolkata से northeastern states को आप connect कर रहे हो, and Indigo got that contract and Indigo is making loss. So viable नहीं हो पाया वो business, so viability gap fund would be provided by the state or by the government. So 90% of the fund would be borne by center and 10% by state. A cap on airfare. यहाँ पे बोला गया है कि price of the ticket will not be more than 2500 for an hour's journey or approximately 500 kilometers. It will not be more than that, so that more and more people start following this route, this mechanism. There are other steps which have been taken to make regional connectivity scheme successful. For example, revival of airstrips, airports as no-frill airports. बहुत इधर उधर का तामझाम नहीं, simple airports बनाना है, and many such airports have been revived. So the problem of ghost airports अभी भी हैं, but it has been reduced to substantial numbers. No airport charges, reduced service tax or on tickets, on 10% taxable value for 1 year initially, reduce excise duty of 2% on ATF picked at RCS airport. आप फ्यूल जब ले रहे हो एयरपोर्ट से, तो उस पे एक्साइज ड्यूटी आपको रिड्यूस करना है. Then steps which state government would need to do. RCS only in those states which reduce VAT. Sales tax, petroleum products पे कौन लगाता है? State लगाता है. So states have to reduce the sales tax on ATF by to 1% or less, provide other support services and 20% of viability gap funding. The states which agree to do that, what? They'll reduce sales tax on ATF to less than 1%, 1% or less than 1%, and they are ready to provide 20% of the
VGS. 80% would be given by center. Only in those states it is being launched. State government will also provide police and fire service free of cost. Power, water, and other utilities at concession rate would be provided to the airport and to the services. Applicability, it would be applicable on route length between 200 to 800 kilometers. अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली से केरला के किसी सिटी में कनेक्शन would be given through RCS. केरला के किसी tier 2 टाउन में कनेक्शन would be given through RCS from Delhi to Kerala. No. Chennai to Kerala may happen. Distance should not be more than 800 kilometers. इक्विटेबल एलोकेशन का कॉन्सेप्ट भी है अंडर आरसीएस स्कीम. व्हाट इज द इक्विटेबल एलोकेशन? अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए था कि ऑल द कनेक्शन इज बीइंग मेड फ्रॉम मुंबई टू गुजरात एंड दिल्ली टू गुजरात. ऐसा हो सकता था बट नहीं. तो व्हाट हैज बीन डन इज दिस. द कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 रीजन: नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ. एंड किसी भी रीजन में 25% से ज्यादा आरसीएस सर्विसेज वुड नॉट बी गिवन. So that equal distribution होता 20% होता, but some region may need more services. So किसी भी region, one region should not get more than 25% of the service. A minimum of 3 and a maximum of 7 regional connectivity flights per week per route would be allowed. A minimum of 9 and maximum 40 seats per flight under RCS would be fine. Regional connectivity scheme will be in operation for 10 years with individual routes contract for 3 years. Now what is meant by this? What it means is, जैसे आज इंडिगो को कॉन्ट्रैक्ट मिला दिल्ली से, कोई शहर बताओ, भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश का पास में बता दो कोई, मान लो रतलाम में एक एयरपोर्ट बना देते, दिल्ली टू रतलाम. आई होप द डिस्टेंस इज नॉट 800 किलोमीटर ना. तो उस रूट पे इंडिगो ने बिजनेस शुरू किया. तो इंडिगो, ये स्कीम कब तक वाले? 2016 से 10 ईयर्स तक, तो 2026 तक. तो अभी भी इंडिगो को नए रूट के लिए आरसीएस मिल सकता है, बट इंडिगो विल गेट द डिस्काउंट वाला बेनिफिट, द वायबिलिटी गैप फंड वाला बेनिफिट ओनली फॉर 3 years. In 3 years they should make the route viable at its own. Okay, these are some of the features. Then market based reverse competition bidding mechanism would be there. Now what is this reverse competition bidding mechanism? So Indigo would come, AirAsia would come, and then what are some other स्पाइस जेड है, तो इंडियन एयरलाइंस भी हो गया है, और वो टाटा वाला कौन सा है, विस्तारा, सबसे अच्छा विस्तारा है. तो विस्तारा में अच्छा खाना मिलता है, विस्तारा. दिल ऑल compete कि I want to provide service here. So who would get to provide service on a particular route? It would be decided by reverse competitive bidding. मतलब someone would say I will provide service at this rate, other one would say I'll provide service at a lower rate. तो जो सबसे कम रेट पे सर्विस प्रोवाइड करने को रेडी रहेगा, दैट कंपनी वुड बी चोजन. ओके, तो एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ बजट ऑफ 4500 crore फॉर रिवाइवल ऑफ existing unserved or underserved airports, airstrips of the state government, Airport Authority of India, public sector undertaking and civil enclaves, etc. Under this initiative, you would see that government has also approved, in principle, approval of setting up of 21 greenfield airports across the country. तो वो तो घोस्ट एयरपोर्ट्स को रिवाइव कर रहे हैं, नए एयरपोर्ट 21 नए एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं. एंड मोर देन 1 crore air passengers have already availed the benefit of Udan or regional connectivity scheme. How they have availed the benefit? उनको for 500 kilometer or for 1 hour of flight, they were able to get it in 2500 rupees. Otherwise, the real prices could have been higher. So this was regional connectivity scheme is one of the features of National Civil Aviation Policy, NCAP, National Civil Aviation. Regional connectivity scheme, पहला feature. Second, route dispersal guidelines have been modified a bit. Now, what is this route dispersal guideline? देखो, if given an option, these air service providers like Vistara and Indigo, they would only want to move between Delhi to Mumbai, Delhi to Kolkata among bigger routes. They would not provide services in the smaller routes. तो उनको गाइडलाइंस दी जाती है कि आपका जितनी सीट्स, जितने पैसेंजर्स को आप इस रूट में ट्रैवल करवा रहे हो ना, उसका एक परसेंटेज छोटे रूट में भी ट्रैवल करवाना हो. इट इज दिस रूट dispersal guide. Now, we'll not go into the details of
what percentage of what, but route dispersal guideline is a feature of civil aviation policy. We should know that. Then 520 requirement has been replaced. Now, what was this 520 requirement earlier, which has been replaced? What was this 520 requirement? 520 requirement was, if you want to fly international flight, then you should have an experience of 5 years in domestic level, and you should have at least 20 flights in domestic. Then you will be allowed to go for international flight. Domestic companies पे applicable है, international पे तो applicable नहीं है, उनका तो एक ही flight इंडिया में आ रहा है, वो भी would be allowed. This was the mechanism, but it was creating problems for, let's say, someone like Vistara. Vistara आया है, उसे international flight शुरू करना है, but then they have to have 5 years experience here first. They could have started international flight within 1 year only, but under the older rules, this problem was there, so they have replaced 520 requirement, replaced with new scheme for starting international flight. What is the new scheme? All airlines can commence international operation provided that they deploy 20 aircraft or 20% of total capacity, whichever is higher in domestic operation. So if they have 100 flights operating in domestic, if their total number of flight is 100, then 20 of them should be operating in domestic. If they have 40 flights, then 20% or 20, at least 20 of these flights they should have operating in India. Only then they will be allowed to go for international. This can happen within 1 year also. So 5-year wala rule or those things have been done away with. Then bilateral traffic rights. So इसमें civil aviation policy said that a government will as soon as possible enter open sky agreement with SAARC countries. Open sky agreement में our flights can fly over their country without any problem. वो चीजें थी. Then airport PPP, public private partnership. So public private partnership for roadways we have already done. रोडवेज का पीपीपी हमने कल पढ़ लिया था in the previous class. So what were the models that we had studied? What सबसे पहले EPC, फिर bought, toll and bought annuity, then hybrid annuity model. Then under operational models we had studied OMT, operate, maintain and transfer, and TOT. Right? These are the models that we have already studied for roadways. Then we had in general studied some other models which are used in railways and all. So civil aviation policy brought the hybrid till model. Civil aviation policy brought the hybrid till model to the civil aviation sector. What did it say? Future tariffs at all airports will be calculated on a hybrid till basis. Now, what is meant by this hybrid till basis, hybrid till model? Let's understand this. देखो, अरे सेकंड वाला हाँ. What is meant by this hybrid till model? Let's understand. देखो, when you go to an airport, so in we are talking about airport development public private partnership से हो, airport development public private partnership से. तो उसमें देखो airport will get two kinds of revenue. One through aeronautics service, जहाज को जो सर्विसेज दे रहे हो. If Indigo uses the airport, it will pay some money and all. One service would be from there and one from non-aeronautic services. KFC है, बिरयानी ब्लूज है, खान चाचा है. मैं अपने काम की चीजें की बात कर रहा हूँ. आपको क्या चाहिए? सबवे चाहिए? सबवे है, उडुपी है,
है ना। और कपड़ों वपड़ों की दुकान रख लो, कपड़ों वपड़ों की दुकानें हैं, यहाँ से भी रेवेन्यू मिलेगा उन्हें, राइट। दे विल बी, द एयरपोर्ट वुड बी गेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम aeronautics and non-aeronautic sectors. Now, there's a model called single till model. Other is double till model. इनका एक नया मॉडल इज हाइब्रिड that has been brought by civil aviation policy. Now, what is single till model? Single till model में बोलते हैं कि revenue of both aeronautics and non-aeronautic sector would be considered together in single till. एंड उसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा कितना फीस लग रहा है प्लेन्स को एंड ऑल. So when the entire revenue is considered, so their fee would be lesser because airport is getting a lot of revenue from other sectors also. This is single till. The entire till would be considered together. Double till model में revenue from these two things are differentiated. And when fee is being charged on, let's say, Indigo and all, उसमें ये देखा जाएगा कि the private company has invested this much in this airport. How will we recover this money? Your recovery is happening through the fee that they are. This till will not be considered. So in this situation, in double till, what happens? जो इंडिगो वगैरह है इनको they may have to pay higher fee. Why? Because the private sector ने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है, they have to recover it from this aeronautic sector in double till. Okay, तो डबल टिल मॉडल में the airplanes वाले परेशान है, single till model में the developer is unhappy. Do not include that revenue from there, only include revenue from here. That's what the developers were saying. Government said, let's make it a hybrid. Hybrid till में not the entire revenue that we get in single till the entire revenue was considered. In double till only the this revenue was considered. वो नहीं consider किया गया. In hybrid till you consider this revenue and a percentage of this revenue, not all of it, a percentage of this. This is hybrid till model. In hybrid till model, 30% of non-aeronautical revenue will be used to cross-subsidize aeronautical charges. समझ में आया निधि? अब मेरे को आपका नाम याद होगा. बेटा देखो फिर से समझते हैं कि बीओटी की बात करते हैं, बिल्ड ऑपरेट टोल. उसमें व्हाट वाज हैपनिंग? प्राइवेट सेक्टर वाज मेकिंग रोड and then they were said कि भाई next 15 years तक you collect all the toll so that you are able to recover your investment. Same would happen here. Private sector which has built an airport, they have to recover their investment, है ना. So they were saying कि okay, we are generating revenue from non-aeronautical sector, aeronautical sector both, but for recovery only consider the aeronautical sector वाला. But by this the aeronautical services provide करने वालों को ज्यादा फीस देनी पड़ रही थी. So they wanted कि नहीं, consider single till where the entire revenue is considered so that हमारी फीस कम होगी. So government has said कि let's make it hybrid till model. Okay, got it? सबको समझ में आ रही है बातें? Okay. अरे आपको तो ज्योग्राफी क्लास में होना था ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. चलिए कोई बात नहीं. Did we understand this? Did we understand one of the models here? Okay. One of the PPP models here. Regional connectivity scheme we have done.
इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम। अभी हमने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम देखा था, वेयर वी वांटेड द टियर 2 टियर 3 cities should be connected by airplane. What is happening here is, under this initiative, government is trying to ensure that states in northeast India, वहां से फ्लाइट्स अवेलेबल है इंटरनेशनल, लेट्स से काठमांडू, लेट्स से बैंकॉक, सिंपल जाओ, बैंकॉक जाने की उम्र, बैंकॉक, these are the places where flights should be available. Now, say not a lot of passengers may be traveling from there, so what would happen? Subsidization would need to happen, something similar to what was happening in regional connectivity scheme. That is being done under international air connectivity scheme. So IACS has been launched with an objective to enhance air connectivity from certain states of the country. कौन से states? Generally northeastern states. It will be supported. The scheme will also be supported by the state government. State governments of Assam, Manipur, and Tripura have identified routes connecting Guwahati, Imphal, and Agartala with selected international destinations like Bangkok. यहाँ पे भी देखो सबसे पहले लिखा है alphabetically. Bangkok, Dhaka, Kathmandu, Yangon, Hanoi, Mandalay, Kunming, Chittagong, etc. International airport in northeastern India. Right now there are only 2 international airports, but they are in the process of developing some others also. तो ये फैक्चुअल है, एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। हेलीकॉप्टर सर्विस. नाउ व्हाई हेलीकॉप्टर सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट? Generally, when the urban area is very crowded, helicopter service could be used by people who are a bit richer to move from one place to another. Disaster management में they could be very crucial, है ना? Sometimes they are very important for providing last mile connectivity for rich people. हमारे लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, हमें तो ई रिक्शा में जाना पड़ेगा, या फिर बस में बैठ के, फिर जीप में बैठ के, फिर ई रिक्शा में बैठ के। तो आपके लिए नहीं करेगा, पर कुछ लोगों के लिए हेलीकॉप्टर कैन प्रोवाइड दिस लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तो हेलीकॉप्टर का ग्रोथ जरूरी है, हेलीकॉप्टर सेक्टर का ग्रोथ जरूरी है। तो व्हाई हेलीकॉप्टर्स आर क्रूशियल? अर्बन कनेक्टिविटी, इमरजेंसी मेडिकल केयर, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू ऑपरेशंस में। देन इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आल्सो दे कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इफ यू गो टू वेरी हिली टेरेन, वहाँ क्रेन्स वगैरह तो नहीं जाएंगी ना, अब वहाँ पे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप कैसे क्रिएट कर पाओगे? हेलीकॉप्टर क्रेन करते हैं, helicopters which function as cranes. So, for example, J&K has set an example of the best use of heli service when it erected transmission lines and towers using heli cranes on the Pir Panjal mountain range. Imagine Pir Panjal पे आप कैसे टावर खड़ा कर पाओगे? Human से possible नहीं होगा, and bigger tools may not be possible. So here, this would be very crucial. So other initiatives launched in recent times to promote helicopter sector. There is Heli Seva Portal, Heli Disha, Helicopter Accelerator Cell. Heli Seva Portal क्या है? जो helicopter operators है, they will be obtaining landing permission to helipads by this portal. Heli Disha, it's a document that has been prepared as guidance material to state government administration to effectively and safely support civil helicopter operation. Helicopter Accelerator Cell, it's fully active in resolving helicopter issues, and the advisory group of industry representative is helping identify the problems related to helicopter sector. Okay, so recently a fractional ownership model has been used. What is fractional ownership model? Now come to poor people. पुअर पीपल के बाद आएंगे मिडिल क्लास वाले, उसके बाद आएंगे थोड़े से और पैसे वाले. नॉट एवरीवन वुड बी अंबानी अदानी, बट अपर मिडिल क्लास और रिच वाले कैटेगरी में भी people may not be interested in spending crores of rupees in helicopter, but they may need helicopter. They may need helicopter service, or they may want to own helicopter and provide service. तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप भी मिल सकती है. लाइक 20 लोगों ने मिलकर एक हेलीकॉप्टर खरीद लिया, उससे सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, जो सर्विसेज से पैसा आ रहा है कैन बी डिवाइडेड अमंग 20 पीपल. दिस fractional ownership model for helicopters was released in October 2022. It will lower the barrier on the cost of acquisition of helicopters.
cost of acquisition would reduce because you can own it fractionally. This will allow companies and individuals to minimize their capital outflow by sharing the purchase cost, reducing their exposure to risk and making it financially easier to run non-scheduled operators permit business. Fractional ownership model has the potential to energize the NSOP model in India and increase the helicopter services in India. Then एक प्रोजेक्ट है कॉल्ड प्रोजेक्ट संजीवनी, एम्स पायलट कॉल्ड प्रोजेक्ट संजीवनी. इट इंक्लूड्स deployment of a helicopter to provide emergency medical services at AIIMS Rishikesh. The helicopter will be based at the hospital and at 20 minutes notice will have service over an area of 150-kilometer radius. So these are certain other civil aviation things which were in news. Then Digi Yatra initiative. किसी ने Digi Yatra initiative का benefit लिया है? हाँ, किसने लिया? आपने लिया है? बताइए क्या हुआ था इसमें? देखो बिफोर डिजी यात्रा के बेनिफिट में जनरली व्हेन यू गो टू एन एयरपोर्ट पहले आपका पहला सिक्योरिटी चेक इन होगा, है ना. सबसे पहले वो गेट पे ही आपका चेक इन नहीं होता, चेकिंग होता है. आपका पूरा आईडी कार्ड चेक किया जाएगा, थोड़ा स्कैन किया जाएगा एंड देन यू विल बी अलाउड टू गो. देन योर थिंग्स वुड बी स्कैन्ड और फिर आपका वो इंडिगो वाले चेक करेंगे आपका आईडी कार्ड एंड एवरीथिंग. देन जाके सिक्योरिटी चेक इन होगा, वहां पे भी स्कैनिंग होगी. एंड सेम थिंग में हैपन एट मल्टीपल एयरपोर्ट्स इफ यू आर ट्रैवलिंग टू मल्टीपल प्लेसेस एंड ऑल. राइट नाउ व्हाट हैपेंस इन डिजी. तो उसमें क्या होता है, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड. नहीं मैं एक बार मेरे साथ हुआ था. आई थिंक आई वाज ट्रैवलिंग टू बैंगलोर. तो अब बाहर ही थे ना सिक्योरिटी, सबसे पहले एयरपोर्ट से बाहर. एंड यू आर इन द इफ यू गो टू टर्मिनल 3 तो बहुत बड़ा कई बार क्यू हो जाता है बड़ा सा, जो बाहर सिक्योरिटी जो CISF पीपल होते हैं वो आपको स्कैन करके अंदर भेजेंगे. तो दिस पर्सन केम टू मी, सर आप आ जाइए. देन ही टुक मी टू अ सेपरेट लाइन जहाँ पे ना मेरा फेस स्कैन किया गया. एंड देन ही सेड सर आप यहाँ से जा सकते. एंड देन आई जब अंदर वाला सिक्योरिटी भी चेक इन भी हो रहा था ना, वहां पे भी थिंग्स वर मच फास्टर मच सिंपलर. बिकॉज इस पर्सन का एक ये डिजी यात्रा वाला आईडी बन गया है, इसको प्रॉपर्ली स्कैन कर लिया गया है. वी डू नॉट हैव टू गो इन द एग्जैक्ट मैकेनिज्म. दिस एग्जैक्ट मैकेनिज्म में कीप ऑन इवॉल्विंग, बट थ्रू दिस दे वर फास्ट ट्रैकिंग. वन, दे वर सिंप्लीफाइंग माई एंट्री, दे वर फास्ट ट्रैकिंग माई मूवमेंट, क्योंकि हमें एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले चले जाते हैं कई बार, जस्ट टू इंश्योर कि लेट ना हो जाए. So they were fast tracking the movement of people, and in long term they were also ensuring better security through Digi Yatra initiative. So it's an initiative for digital processing of passengers at air. It envisages a connected ecosystem enhancing the seamless travel experience for the passenger. Connected ecosystem because it will be digital, it could be very well connected, and at different places the same information, same data would be available, and simultaneously improving the security. Every person will become a Digi Yatri and enjoy the privilege and benefits of Digi Yatra program. The main objective is to improve passenger experience, roll out Digi Yatra with digital ID backed by a strong verifiable document, which would ensure that across India, आपका security check-in would be. Okay, this is Digi Yatra initiative. Then there are some other initiatives. Operation Ganga. जब यूक्रेन से हम स्टूडेंट्स को लेके आए थे, that was under Operation Ganga. Then this will we are going to study in details. We have already briefly studied International Civil Aviation Organization. कहाँ पढ़ा था? कॉर्सिया याद है? कॉर्सिया आपको याद है? और अरे वी स्पोक अबाउट नो. देखो पेरिस एग्रीमेंट में 2 चीजें कवर्ड नहीं है, सिविल एविएशन एंड शिपिंग सेक्टर. So both of them have come up with their own mechanism of reducing CO2 emission. So International Civil Aviation Organization has come up with CORSIA, जहाँ पे after 2020 the emissions that you are increasing, you have to offset that. That was the initiative of ICAO, International Civil Aviation Organization, है ना. So we will study International Civil Aviation Organization in greater detail in international bodies. अभी हमारा पॉलिटी, इंटरनेशनल बॉडीज, these are the only 2 things left primarily important वालों में से. So in international bodies we will study ICAO in detail, but एक चीज नोटिस कर लो that during the 41st General Assembly of ICAO, India has been re-elected to the ICAO Council. अभी बस इतना याद रख लेना, ICAO Council में 2022 में इंडिया का री-इलेक्शन हो गया था.
ICO के बारे में अभी वी विल स्टडी इन डिटेल व्हेन वी आर कमिंग टू इंटरनेशनल पॉलिसी। देन नेशनल एयरपोर्ट पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन जून 2022 लॉन्च नेशनल एयरपोर्ट पॉलिसी। किसी ने स्काई डाइविंग करी है? स्काई डाइविंग? विष्णु, तुम कोने में क्यों बैठ जाते हो जाके, जो कुछ किया भी नहीं? किसी ने स्काई डाइविंग नहीं की? पैराग्लाइडिंग? यू हैव डन इट। कहाँ पे किया, कहाँ पे किया? गोवा में? तुम गोवा भी घुमाते हो ना, कब गए थे तुम? शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे टीचर मेहनत कर रहा है, नोट्स बना रहा था छोटे। अब तो पता है मेरे पार्टनर्स मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने उनसे बोला इस बार मैं मई में जा रहा हूँ ट्रैक पे। दे सेड सर हमें लास्ट ईयर के आपका उदयपुर ट्रिप ट्रिप पता है जो कभी हुआ नहीं, फिर आपने बोला आप गोवा जाओगे वो भी कभी हुआ नहीं, तो मेरे से शर्त लगाई है करण सर ने, मैं सर गारंटी दे रहा हूँ मई में भी आप बोलोगे सर नहीं ये काम है वो काम है ये नोट्स बनाने वो नोट्स बनाने, आप नहीं जाओगे। मेरी ये ऐसी हालत कर रही है टीचर की, और तुम गोवा ट्रिप का मार रहे हो। दिसंबर में क्यों चले गए तुम गोवा? ये फैमिली फंक्शन गोवा में किसका होता है यार? हमारा फैमिली फंक्शन गांव में जाके वहां होता है जहां लाइट नहीं है, तुम्हारा फैमिली फंक्शन गोवा में होता है। तुम क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो मुझे। ऐसे लोग जिनका फैमिली फंक्शन गोवा में होता हो। बलबीर सोच रहा है चलो अच्छा है सागर के लगे मेरे मजे नहीं लिए जा रही। फैमिली फंक्शन गोवा में बीच पे है? पक्का? तो तुम्हारी तो डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, गोवा में बीच पे शादी वादी होगी तुम्हारी, मजबूरी है, देख रहे हो। एनीवेज, so these like skydiving, paragliding are air sports. These are air and air sports। देखो एक तो टूरिज्म पर्पस के लिए अच्छा है बट रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी अच्छा है ना, राइट? तो देर आर लॉट्स ऑफ दीज एयर स्पोर्ट्स, जैसे एरोबैटिक्स है, एरो मॉडलिंग, अमेच्योर बिल्ट एंड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, बलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग एंड पावर ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग एंड पावर हैंग ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, powered aircraft including ultralight, microlight and light sports aircraft, rotocraft. These are different forms of air sports. इसमें hang gliding, paragliding, these things you may know about. Sorry, Ministry of Civil Aviation has recently launched a policy to promote air sports in India. Now, India has a lot of potential. Why? Because we have a large geographical expanse. इंडिया में हम स्काई डाइविंग भी कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। जस्ट इंडिया इज एन अमेजिंग कंट्री इन दैट। आपको जो जो चीजें करनी है यू विल बी एबल टू डू इट। तो इंडिया हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, प्लस वी हैव अ लॉट ऑफ यंग पीपल। अब older people will not do this kind of activities much. No, there would be exceptions there also, जिनकी ट्रिप्स गोवा में होती हैं, फैमिली ट्रिप वो बुढ़ापे में भी एंजॉय करेंगे। तुमने ऐसे रिटायरमेंट हाउस ले लिया कहीं गोवा में? महंगा है कितने? मेरे लिए कम है, शर्म नहीं आ रही? मैं दिल्ली में घर नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मम्मी पापा को शिफ्ट करूँ यहाँ। जब यहाँ पे घर के रेट्स देखता हूँ उनका है क्या, डीडीए फ्लैट्स के फॉर्म भर दूँ, LIG ले लूँ, लो इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, भर सकते हैं ऐसे डीडीए फ्लैट। रेसिडेंट नहीं भर सकते हैं? डीडीए फ्लैट्स नॉन रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली भर सकते हैं, ये क्या मतलब है? अच्छा, देखो मैं रह तो रहा हूँ दिल्ली में 7 साल से, बट मेरा वोटर आईडी अभी भी हरियाणा का ही है। तो कोई घोटाला नहीं होता ना? होता है? अच्छा, डीडीए में जान पहचान निकालनी पड़ेगी। तुम लोग सेलेक्ट हो भाई, अच्छी अच्छी पोजीशन पे जाओ, मेरे को घर तो मिल पाए। चलिए, क्या बोल रहे हो? तो HIG यहाँ पे कितने में मिल जाएगा? HIG LIG कितने में मिलेगा ये बताओ?
टोटल कॉस्ट बताओ, नहीं पता। लेट्स कम बैक टू दिस। तो India has lots of potential of these things, not only because of geographical expansion, different geographical features being available in India, but also we have a lot of young population, more adventurous population. The as income goes up, as youth become more and more independent, as social services improve. देखो आज से 20 साल पहले क्या था, एक बच्चा जब एक बच्चा या बच्ची 21-22 साल का हो रहा है, हो रही है, उनके पास ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती। पेरेंट्स वुड से कि वी आर गेटिंग रिटायर्ड, यू फाइंड अ जॉब एंड स्टार्ट वर्किंग। दैट्स नो मोर द केस, दैट्स स्टिल द केस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु कैन डू व्हाटएवर दे वांट। उन्हें कोई नहीं बोलेगा 24 साल में जाओ ये काम करना, जॉब लेना शुरू कर दो, इस चीजें। So there are lots of people who are ready to do these kind of adventure, and thus there's a lot of potential. And उसके लिए government has launched NASP. So NASP will cover these air sports. Under the new policy, there would be 4-tier governance structure. This policy, when will you implement this policy for the governance of air sports, there would be 4-tier governance structure. At the top would come Air Sports Federation of India. Then सेकेंड लेवल पे आएंगे अलग अलग स्पोर्ट्स के नेशनल एसोसिएशन। अलग अलग एयर स्पोर्ट्स में भी वी हैव सीन वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स। सेकेंड लेवल, सेकेंड टियर पे विल हैव नेशनल एसोसिएशन ऑफ दोस स्पोर्ट्स, देन रीजनल एसोसिएशन एंड देन डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ दोस। तो 4-tier governance mechanism is there. Are we understanding? Okay. Then what are the objective? Objective तो air sports promote करना, enabling adoption of international good practices in safety. These air sports are the most risky one, है ना? कोई स्काई डाइविंग कर रहा है और डाइव की बजाय नीचे आ गया, कितने खुश होके बता रहे हैं नीचे आ, फिर ऊपर जाए, बैंड्रा बोल रहा है फिर ऊपर जाएगा। तो इट्स वेरी रिस्की। ये मुझे बाहर जाके बोलता है तो उसे बैंड्रा नहीं बोलते, इसका प्रोनाउंसिएशन ज्यादा अच्छा है ना, एकदम परफेक्ट वाला। बोलते सर बैंड आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, आप हिंदी बेल्ट के गरीब लोग, हम साउथ बॉम्बे वालों को प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हो। ये अभी ना सिद्धार्थ ने सिद्धि अचीव नहीं करी, अभी झूठ बोलता है। लेट्स कम बैक टू दिस। तो फर्स्ट इज सेकेंड इज ensuring safety, international standards in safety. Third, develop a simple, stakeholder friendly and effective governance structure. Stakeholder friendly हमने देखा है हर लेवल पे the federation would be contributing. Enhance the participation and success of Indian sports person in global air sports event. In these more people participate. International competition में Indians are participating and winning. And promote design, development and manufacturing of air sports equipment in India, so that more jobs. India remains आत्मनिर्भर in this category also. आपको एयर स्पोर्ट्स खेलने के लिए, एयर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, यू हैव टू यूज ऑल दिस इक्विपमेंट्स. वी शुड बी रेडी फॉर दैट. वी शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल इवेंट्स. वी शुड बी they'll be providing a proper governance structure, and the safety practices should be followed. National Air Sports Policy. तो देखो एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी पहले तो आएगा किसने रिलीज किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. एंड देन व्हाट आर द की कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये सारी चीजें हमें पता होंगी. ओके, गॉट इट. नाउ एयर सेफ्टी, एविएशन सेफ्टी. तो आईसीएओ का एक सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग होता है. इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिविल एविएशन, यूएन बॉडी फॉर सिविल एविएशन होगा, मॉन्ट्रियल में है, एक बार मैं देख लूँ. एनीवे, इसका एक एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट होता है. इसमें इंडिया रैंक हैज इंप्रूव फ्रॉम 112 टू 50. इसको ना एक स्मॉल करेक्शन करना, नहीं इसमें नहीं, यहाँ करेक्शन की जरूरत नहीं है. डीजीसीए ने अभी फरवरी में ये न्यूज दिया है कि इंडिया रैंक हैज इंप्रूव टू 55. इन्होंने नवंबर में कुछ और रैंक दिया था इंडिया. तब तक फाइनल डेटा वाज नॉट अवेलेबल विद डीजीसीए. So now in some sources, in some current affairs material, you may see some other rank, but that was of November news. The final result
is that of February 2023. उसमें India's rank has gone to 50. उसमें वो 40s में कहीं रैंक. So don't assume कि यहाँ गलती हुई है. This is the updated one. This is the latest. Okay. तो ICAO का रैंकिंग है. कौन सा रैंकिंग? सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग. उसमें इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है. Now how is this this safety oversight ranking is part of Universal Safety Oversight Audit Program. The Universal Safety Oversight Audit Program is an initiative by ICAO where they in different countries based on these parameters, these key elements, rank state. Which elements? The laws there. Primary aviation legislation and civil aviation legislation in the country. Civil aviation organization body, पर्सनल लाइसेंसिंग एंड ट्रेनिंग, पायलट की ट्रेनिंग कैसे हो रही है एंड ऑल, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, एयरवर्दीनेस ऑफ एयरक्राफ्ट, क्वालिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म्स, एयर नेविगेशन सर्विसेज, एरोड्रोम एंड ग्राउंड एड. बेस्ड ऑन दीज 8 critical areas, rankings are given to different countries. में इंडिया का रैंक has improved to 55 from 112. Ranking is dynamic and contingent upon the outcomes of various audits undertaken by IC. Got it? Then aircraft security rules 2022. Now these are draft rules. मैंने draft को bold पे रखा है. Please note it carefully. So these rules are not in force yet. No, पिछले ranking से improve. It's not early. Okay, let's come back to this. Aircraft security rules 2022. Aircraft security rules 2022. ये मेरे पास अभी भी लास्ट मैसेज ना वही है. लगता है सर कभी कोलकाता नहीं आए. मैं बार बार कोलकाता की इमेज खराब कर रहे हो. मतलब उसके बाद कोई डाउट भी नहीं पूछा है किसी ने. तो आई सी दैट कमेंट ओनली एंड आई हैव अ वेरी गुड इमेज ऑफ कोलकाता. आई वेंट टू कोलकाता इन 2000, आज से 20-23 साल पहले. तो उस टाइम मैंने नोटिस नहीं किया होगा. आई हैव अ गुड इमेज ऑफ कोलकाता. मैं मेट्रो में बैठा था यार वहां पे. Delhi did not even have metro, and when I visited metro there, I felt like I've come to some foreign country. लोग वैसे ही थे, but generally see when you go to railway stations, 2000 में railway stations used to be very dirty, but when you went to that underground metro, it was shining like anything. You felt like for a 10-year-old kid, it was like a beautiful place and all. So I had that image of Kolkata, and इसने ruin कर दिया. अबे तुम हावड़ा ब्रिज पे जाते क्यों? चलिए, let's come back to this. Aircraft security rules. These are draft security rules which have been notified by Ministry of Civil Aviation. Draft है, please समझो इसे, अभी adopt नहीं हुआ है. But some of the key things in this rules are like, देखो, there is this body, Bureau of Civil Aviation Security. This body, Bureau of Civil Aviation Security, is a department under the ministry, and it will fine DGCA and other authorities if for security they are not taking proper steps, if they are not following proper guidelines. So Bureau of Civil Aviation की powers to impose fine is being increased in this new rule. अब ये 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लगा सकते हैं on airports or on airlines who are violating security measures. Similarly, here there are provisions for cyber security threat also. It has been said that the rules also require each entity to protect information and communication technology systems against unauthorized use and prohibit disclosure of sensitive aviation information to outsiders. Then private security agents wala concept. So abhi if you go to airports are guarded by CISF officers. CISF वाले लोग होते हैं जो एयरपोर्ट को गार्ड करते हैं. अंडर द ड्राफ्ट रूल इट हैज बीन सेड कि नॉन क्रिटिकल जो एरियाज होंगे, नॉन कोर एरियाज होंगे, वहां पे प्राइवेट गार्ड्स कैन आल्सो बी. तो बहुत इस पे कंट्रोवर्सी हुआ था. देयर वर सम न्यूज आर्टिकल्स व्हिच वर सेइंग कि अदानी का एयरपोर्ट हो गया, अब अदानी के सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे. दिस काइंड ऑफ न्यूज वर कमिंग, राइट? So this was because of these rules, these draft rules which had come, where it has been said that in non-core areas, even private security guards could be there, not the CISF. CISF is a government entity.
ना, सीएपीएफ का पार्ट है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो दे कैन बी ट्रस्टेड। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हमें पता है could be problematic. So these are the three things which three important things which we should know, but these are draft rules. तो इसके आने के चांसेस नहीं है। क्या आएगा? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इट? So it's a body, it's an independent department under Ministry of Civil Aviation and is responsible for laying down standards and measures with respect to security of civil flights. अगर वो मेजर स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे तो दे कैन ऑल्सो इम्पोज फाइन। सर सब जगह अच्छा बुरा दोनों होता है, पॉइंट इज हम क्या देखना चाहते हैं। हाँ मुझे तो अच्छा देखा था कोलकाता में सर। इनलैंड वाटर, लेट्स कम टू इनलैंड वाटर। पर बुरा भी देखना चाहिए ना, तभी तो वो इम्प्रूव होगा। अरे देखना चाहिए मतलब तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? उसे इम्प्रूव करना चाहिए, वो मतलब है। तुम क्या बुरा देखो तो चले गए। आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट गांधी जी, ठीक है? है? जा चुका हूँ। अच्छा गांधी जी वेजिटेरियन थे ना? ओ ठीक है, जा चुका। इनलैंड वाटरवेज। भगत सिंह क्या थे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? कोई फ्रीडम फाइटर बताओ जो नॉनवेज खाते थे, उनको फॉलो करना। भगत सिंह खाते होंगे, आई डोंट। नेहरू, सावरकर, है ना? बस हो गए। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स whom आई कैन एमुलेट। और नहीं नहीं, मैं कम्युनल नहीं, जिन्ना से एकदम सेटिंग बैठ ही नहीं पाए। द आइडिया ऑफ रिलीजन से मोबिलाइजेशन इज अगेंस्ट, मैं उसमें बिलीव कर ही नहीं, है ना? मतलब जिन्ना नहीं, कोई और अच्छा लीडर बता दो जो नॉनवेज खाता हो। ओके लेट्स कम टू इनलैंड वाटर। ध्यान देंगे थोड़ा सा कुछ कोर एरिया से। देखो इनलैंड वाटरवेज क्या है, हमारे रिवर्स पे जो शिप्स चल पाए ना, गंगा रिवर है उस पे शिप्स या बोट्स, इनलैंड वेसल्स बोल लीजिए, दे आर एबल टू मूव देयर, तो इट वुड बी लाइक शिप ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्ट कॉस्ट or the fuel that is burned, let's say if you have to travel 100 kilometers, if you have to carry a 100 kg weight to a distance of 100 kilometers, highest amount, highest cost and highest fuel burn would be in air travel. उसके बाद second highest would be in land roadways, तो sorry हाँ second highest would be in roadways, third highest would be in railways। मतलब लोवेस्ट की तरफ जा रहे हैं, नीचे कॉस्ट कम हो जाएगा रेलवेज का। सबसे ज्यादा कॉस्ट और सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ यूज होगा? एयरवेज में, फिर रोडवेज में, फिर रेलवेज में एंड फिर वाटरवेज में। एंड देयरफॉर जो प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वाटरवेज आर देयर, तो शिप से ट्रांसपोर्ट होंगे बिकॉज दे वुड बी मच चीपर, अ बिट स्लोअर बट मच चीपर। सेम इज द केस विद inland waterways also, and that's why we want to promote inland waterways a lot. And it's not only in India, like all over the world, major countries where inland waterways ka possibility hai, a lot of their trade is taking place through inland waterways. India also has a lot of potential. As per Economic Survey of India, navigable length of waterways in different states, if you would see, West Bengal has the longest navigable length, then Assam, Kerala, Odisha, Karnataka, Andhra Pradesh, Bihar, Maharashtra, Uttar Pradesh, these are some of the states in this order. Why do we need to focus on inland waterways? Contribution in trade of inland waterways in India is only 3.5%, whereas in China it's 47%, in Europe it's 40%, in Japan it's 44%, even in Bangladesh it's 35%. So it indicates that there is one mode of travel which we have not properly utilized. First aspect. Second, fuel efficient and thus it's cost effective. फ्यूल डिपेंडेंस, अगर फ्यूल कम यूज हो रहा होगा तो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी रिड्यूस करता है। इट इज लेस फ्यूल इज बर्न, इट वुड बी लेस पोल्यूटिंग। इकोनॉमिक ग्रोथ इन जॉब, न्यू सेक्टर वुड इमर्ज, reducing pressure on roads, this is a very important aspect. If
लॉट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेट्स से यमुना के ऊपर से होने लगे, है ना, रोड्स पे प्रेशर कम होगा, रोड्स पे ट्रक कम होंगे, fewer accidents because they would be moving much slowly and roads are already congested, तो accident होने के chances ज्यादा हैं, and then less land acquisition problems and less deforestation. These are all the advantages that we may get from where, from here. Now to promote inland waterways, several steps have been taken over the last few years. We will talk about those steps. उसमें एक latest step is Indian Vessels Act 2021. In August 2021, the Parliament had passed this law, which replaced the older law. What was the older law? Inland Vessels Act 1970. It is given in this year's Economic Survey of India also. इसलिए important भी है. Important इसलिए not only because it's just 2 years old or 1.5 years old, but also in Economic Survey of India, in inland waterways section, they have primarily talked about this topic. They haven't discussed other things. They have primarily dealt with that. So what was the older law and what were the problems there in this older law? Inland Vessels Act 1970. The older law का major problem था कि there were different regulation for inland vessels in different states. So if you had to transfer something from Uttar Pradesh to Kolkata, then Uttar Pradesh के rules regulations अलग होंगे, उसके वो जो certificates issue करेगा, that may not be applicable in Bihar. Their rules and regulation would be different. Then that may not be applicable in Jharkhand or in West Bengal. These problems were, because of this, the inland waterway sector mostly remained confined within states. Interstate was difficult, was confusing. So separate rules by different states, provision for restrictive movement of mechanically propelled vessels, non-uniform standards, limited applicability and validity of certificates, variable regulations, varied from one state to another. Did we understand this? So the new law is harmonizing the situation. That is, it is bringing uniformity, it is bringing uniform standards. Under this, the standards which would be created, जैसे certificate जो यूपी में issue होगा, that certificate would be accepted in other states also. That is being done. So uniformity of rules and regulation across states, seamless, safe and economical transport, standards for classification and categorization of mechanically propelled vessels, standards and processes involved in registration of the vessels would also be provided under the law, so that in different states, similar kind of things could be there, preserving the statuses of authorities established by respective state governments. So state government authorities would still have their status protected. It's just standardization would be. ऐसा नहीं है कि state government के domain में they are interfering. This law is interfering. The act provides for central database or e-portal also, which will include all information about registration of vessels, vessel crew and certificates issued, so that different state authorities could all verify it easily from this central portal. Then a development fund will also be set up for various purposes such as emergency preparedness, containment, and it stipulates for higher standards for safety, for navigation, for environment pollution, for trade practices. This law is coming up with better, stronger standards for inland vessels on these grounds. Inland Vessel Act 2021. Inland Vessel Act 2021, which has replaced the Inland Vessel Act 1970. इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे. इट्स ऑल्सो वन ऑफ द बॉक्स थिंग्स. देन वी हैव इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985. एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनी है. कौन सी? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी. Inland Waterways Authority of India. Purpose: promoting waterways. IWAI is the nodal agency under the Ministry of Shipping to make national waterways commercially navigable. It aims to increase the cargo transportation through IWT. Currently, it is developing the national waterways for commercial navigation, including assistance from World Bank, and is headquartered in Noida. So this is a statutory authority created by Inland Waterways Authority of India Act 1985. Now we'll come to National Waterways Act 2016. Now, if you would go to the Constitution of India, उसमें कुछ provisions हैं जो बोलते हैं कि
जो वाटरवेज नेशनल वाटरवेज होंगे वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव रोल टू। तो इससे पहले व्हेन सम वाटरवे वाज डिक्लेयर्ड नेशनल वाटरवे, तो एन सेपरेट एक्ट वाज बीइंग पास, जैसे नेशनल वाटरवे 1 एक्ट, नेशनल वाटरवे 2 से रिलेटेड एक्ट, नेशनल वाटरवे 3 से रिलेटेड। बट here in 2016 what happened was National Waterway Act 2016 was passed, which declared one under this act 111 waterways have been declared national waterways where central government would have much bigger role to। तो क्या हुआ, देखो पुराने 5 वाटरवे नेशनल वाटरवेज थे जो 5 अलग अलग कानून से बने थे, अलग अलग लॉज से बने थे, दे हैव आल्सो बीन सबज्यूम्ड अंडर इट एंड 106 new stretches have been declared national। 5 तो पुराने वाले थे, they have been subsumed under it, and 106 new stretches have been declared national waterways। So total 111 national waterways। Total 111 national waterways this act has provided for it। It has declared 111 rivers or river stretches, creeks, estuaries, etc. as waterways। Now, according to entry 24 of the Union List of the 7th Schedule, Union government can regulate these waterways for development with regard to shipping, navigation, transportation, etc. क्योंकि नेशनल वाटरवेज एक बार किसी को डिक्लेयर कर दिया तो यूनियन गवर्नमेंट का रोल आ जाता है वहां पे। नाउ these waterways are in 24 states and cover around 20,000 kilometer area। Most of the waterways are in Assam 17, and then West Bengal has 16 of them। These would have highest number of waterways। Other than this act, there are several other initiatives which have been taken to promote national waterways, जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट। हम सागरमाला प्रोजेक्ट पढ़ेंगे कल की क्लास में, जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें हम सागरमाला, शिपिंग वाला सेक्टर बचेगा इसके बाद भी, तो वहां पे सागरमाला, जैसे भारतमाला पढ़ा था, भारतमाला इज फॉर व्हाट, रोडवेज, सागरमाला इज फॉर वाटर, नहीं नॉट वाटरवेज, शिपिंग सेक्टर। शिपिंग सेक्टर उसमें इनलैंड वाटरवे वाला कंपोनेंट भी है। सागरमाला में हम पोर्ट्स को इंप्रूव, पोर्ट लेड डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, उसमें इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने का कंपोनेंट भी है। इट्स नॉट स्पेसिफिकली फॉर इनलैंड वाटरवेज ओनली, इट्स नॉट स्पेसिफिकली फॉर, ओके। तो सागरमाला इनिशिएटिव इज कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल वाटरवेज। देन ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये एक्ट है जिसमें 111 वाटरवेज वर ब्रॉट अंडर इट। Then Jal Marg Vikas project is being implemented। Jal Marg Vikas project is being implemented on National Waterway 1। National Waterway 1 कहाँ पे है, इलाहाबाद से हल्दिया। Now जो Jal Marg Vikas project 1 is being implemented from Varanasi to Haldia। Idea is, देखो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट to augment capacity of National Waterway 1 with the technical and financial support of World Bank। Its objective is to achieve an appropriate depth and width to enable commercial navigation of vessel with capacity of 1,500 to 20,000 deadwood tonnage। Sorry, 1,500 to 2,000 deadwood tonnage। The project entails development of fairway with 3-meter depth between Varanasi and Haldia। तो नेशनल वाटरवे 1 के एक स्ट्रेच पे इट इज ट्राइंग टू इंश्योर कि एटलीस्ट इतने डेप्थ पानी अवेलेबल रहे सो दैट दीज बिग शिप वुड बी एबल टू मूव अराउंड। कंप्लीशन का टारगेट 2023 था, तो लेट्स होप इट गेट्स कंप्लीटेड दिस ईयर। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वाटरवेज इन इंडिया, जैसे 1 2 3 4 5 तो आपको एग्जैक्टली पता होने चाहिए कौन कौन से। नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद टू हल्दिया, गंगा भगीरथी हुगली वाले उस पे है। इट इज सर्विंग यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। National Waterway 2 is on Brahmaputra River, Dhubri to Sadia में। National Waterway 3 is West Coast Canal। It's connecting Kottapuram to Kollam along with Udyog Mandal and Champaka Canal। It's serving Kerala। National Waterway 4 is Kankinada to Puducherry। Kankinada is Andhra Pradesh to Puducherry, मतलब तमिलनाडु से होके पौंडीचेरी वाले रीजन में जा रहा है। Along with Godavari and Krishna River, states of AP, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry। National Waterway 5 East Coast Canal, it integrated with Brahmani River and Mahanadi Delta River। National Waterway 16 है लखीपुर एंड बंगा के बीच में बरक रिवर पे। States which are served are Assam, Mizoram, Tripura and Manipur। Now note something, before the 2016 Act came 5 वाटरवेज थे, नेशनल वाटरवेज थे। जो छठा वाटरवे था ना, वो ये वाला, कौन सा,
लखीपुर से भंगा के बीच में बरक रिवर। It was planned it would be declared as National Waterway 6, but in the new list, it is National Waterway 16. It is National Waterway 16. Okay, National Waterway 10, River Amba, National Waterway 16, Mandovi River, National Waterway 73, River Narmada, 83, Rajpuri Creek, 85, Revadanda Creek, Kudalika River system. These are the ones which are getting developed or have already been developed. Okay, 91 है शास्त्री रिवर, जयगढ़ रिवर, 97 है सुंदरबन वाटरवेज, an important one. सुंदरबन रीजन में सुंदरबन वाटरवेज में it's there. National Waterway 100 is River Tapi. National Waterway 111 is Juari River. These are operational, or in these are operational, at least in parts they are operational. Okay, so these are important waterways in India. थोड़ा सा टाइम लगाइएगा, देखिएगा रिवर कहाँ पे है. That will help you in your prelims like mapping वाला section as well. Okay, so let's end this session here today. कोई doubts वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा. Tomorrow again you will have your RTFQ, revised to 500 question initiative on polity starting from 4 PM. But मैं कोशिश करूंगा कल सर जल्दी 5:30 तक खत्म कर दें, so that we can start our class from that. On Sunday you have your test. You know about your test. Okay, चलिए. तो we'll continue with this, है ना. This week we will finish पूरा इकोनॉमी, जो भी करंट अफेयर्स बाकी है, एक बैंकिंग का, एक एग्रीकल्चर का और थोड़ा सा एनर्जी सेक्टर का ना. विल फिनिश दिस, देन विल स्टार्ट पॉलिटिक्स. ऐसे ही किसी ने बोला ग्रुप पे कि सर पहले ये करते हैं, देन यू स्टार्ट पॉलिटिक्स. ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच.